civilization. In last chapter we have learned about the Indian subcontinent and history. In this chapter we will learn about the Harappan civilization. This chapter is of 6th standard and it is of the history. आज हम हड़प्पन सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे. So our first point is the Harappan civilization. Our second point is the house and town planning. Our third point is the seals and pots. Our fourth point is the Great Bath. I have not write 2 points because I does not has much more place. So fifth point name is the trade and sixth point name is the reasons for the decline of the Harappan civilization. Now we will see our first point, that is Harappan civilization. Archaeological excavation first began in 1921 CE in Punjab at the banks of the river Ravi. तो सबसे पहले 1921 CE में पुरातत्व खुदाई हुई थी जो कि पंजाब में और किस बैंक के रिवर में, रावी बैंक के रिवर में, रावी. And this civilization came to be known as the Harappan civilization. और इस civilization को क्या जाना जाता है अभी? Harappan civilization. It is also known as the Indus civilization. और इसको इंडस सिविलाइजेशन भी बोला जाता है. The excavation at the Mohenjo-daro was about 650 km towards the south of the Harappa in the Indus Valley. तो जो मोहनजोदारो में जो एक्सकवेशन जो खुदाई थी वो 6 किलोमीटर बड़ी थी किसकी ओर? साउथ, जो हरप्पा है उसके साउथ की ओर, जो कि इंडस वैली में है. There was a striking resemblance between the artifacts and the structures and we can find at the two places. So similarly it is also be seen at the Dholaveri, Lothal, Kalibangan and Daimabad. I am writing the names. हमको ये सिमिलर किधर देखने को मिलते हैं? धोलावरी, सेकंड इज लोथल, थर्ड इज कालीबंगन एंड फोर्थ इज द डायमाबाद. So the similar characteristics we can see in the Harappan civilization. तो उसके similar characteristics विशेषताएं हम Harappan civilization में भी देख सकते हैं. Includes like the town planning, roads, housing planning, etc. तो उसमें क्या included है? Town planning, housing, roads और etc. included है. So our first point is completed, that is Harappan civilization. Now we will see our second point, that is house and town planning. I am roughing this. Now our second point is house and town planning. The houses and the other structures of Harappans are made from the baked bricks. तो जो हाउसेस, जो घर होते और जो स्ट्रक्चर्स थे अलग, वो किससे बने थे हरप्पन सिविलाइजेशन से? बेक्ड ब्रिक से बने हुए थे. Somewhere the unbaked bricks and the stones were also used for the construction. किसी जगह पर अनबेक्ड ब्रिक्स, न भुजे हुए ब्रिक्स भी यूज किए जाते थे और स्टोन्स भी यूज किए जाते थे घरों को बांधने के लिए. And there was a room in the house which were in the central courtyard. और रूम थी हाउस में जो कि सेंट्रल कोर्टयार्ड, बीचों बीच जो आंगना होता है उसके बीच में बांधा गया था. The street has the drains covered. The street was covered by the drains which were built by the bricks. तो जो स्ट्रीट जो थी उसके पास ड्रेन्स यानी नाले थे. उस स्ट्रीट के पास ड्रेन्स थी, वो किससे बने हुए थे? ड्रेन्स, नाले ब्रिक से बने हुए थे.
सेक्शंस में बांटे गए थे और हर सेक्शन को अपनी एक अलग अलग किल्लेबंदी थी. So this was the houses and town planning of the Harappan civilization. Now we will see our third point, that is the seals and pots. I am roughing this. The seals of Harappan civilization were of square shape and mainly and made from the stone called the steatite. तो जो हरप्पन सिविलाइजेशन के स्क्वायर शेप में सील्स बनाए गए थे, लाइक दिस स्क्वायर शेप में सील्स बनाए गए थे हरप्पन सिविलाइजेशन के, और किस स्टोन से बनाया गया था, उस स्टोन का नाम है स्टीटाइट. This seals bear the pictures of various pictures. तो ये जो seals है इसमें बहुत सारे पिक्चर्स होते थे, like of the animals, like the elephant, tiger. एनिमल्स के पिक्चर वो बियर करता था, जैसे एनिमल्स जैसे टाइगर, एलिफेंट और एक्सेट्रा. एंड द ह्यूमन एंड सिमिलरली टू इट्स द यूनिकॉर्न के भी पिक्चर्स उसमें थे. द ह्यूमन फिगर्स वेर आल्सो बी सीन. ह्यूमंस के जो फिगर्स थे वो भी हमको देखे जाते थे. The pots were of different designs and of different shapes. तो उधर के जो pots थे ये different designs और different shapes से थे. The pots were of the red terracotta and the black designs on it. तो जो pots थे वो black terracotta से बने थे और उसमें red terracotta से बने थे और उसमें black designs थी. The design's name is the interlocking circles, fish scales and the people leaves. I am writing name. उसमें की डिजाइन्स जो थी वो थी फिश स्केल्स, इंटरलॉकिंग सर्कल्स और पीपल लीव्स. The Harappan people used to bury their dead ones. तो जो हरप्पन के लोग थे वो अपने डेड वंस जो मरे हुए इंसान है उनको बरीड करते थे. एंड दे यूज द पॉट्स विद द बरीड बॉडीज. और वो पॉट्स भी यूज करते थे बरीड बॉडीज के साथ. So our third point is completed, that is seals and pots. Now we will see our fourth point, that is the Great Bath. A spacious bath has been discovered at the Mohenjo-daro. एक बहुत बड़ा एक विशाल बात ये किधर दिखाया गया था, मोहनजोदारो. It was 2.5 meter deep, 12 meters long and 7 meters wide. ये 2.5 meters खोल थी, 12 meters long थी और 7 meters wide थी. There was the bricks at its line to prevent the seepage of the water. जो स्पेशियस बाथ था उसके बाजू में एक ब्रिक्स लगाए गए थे क्योंकि उससे पानी बाहर ना निकले, पानी नीचे ऐसा नहीं हो, इसीलिए ये ब्रिक्स लगाए गए थे. There was a steps leading down. उधर स्टेप्स भी थे नीचे आने के लिए. There was also the provision for the cleaning, refilling of the water from the time to time. उधर नियम भी थे वाटर को क्लीन करना. और this point was also included, that is life of Harappan civilization. The Harappan peoples practiced agriculture. हरप्पन के जो लोग थे वो एग्रीकल्चर करते थे,
एग्रीकल्चर का ऑक्यूपेशन करते थे। जो एक्सकवेशन, जो खुदाई थी कालीबंगन में, वो हमको क्या प्रूफ देता है कि उस टाइम पर भी प्लॉगिंग होती थी, मतलब फील्ड को जोतना था, उस टाइम पर भी ये हमको प्रूफ मिलता है। सो द पीपल्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन ग्रोज द क्रॉप्स लाइक द व्हीट एंड बार्ली। तो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे वो क्रॉप्स ग्रो करते थे, जैसे व्हीट और बार्ली। And in Rajasthan the wheat barley was at the large scale, while in Gujarat it was the ragi. And the Harappan people also cultivated the peas, lentils, etc. तो हड़प्पन पीपल ये क्या पीस और लेंटिल्स यानी मसूर, तो पीस और लेंटिल्स भी ये कल्टिवेटेड करते थे। Now I am roughing this. The statues, the pictures of the seals and the remains of the cloth. The statues, the pictures of the seals and the cloth found in the excavation at Harappa, we can know that they also weaves the cloth. तो जो स्टैचूज थे, जो पिक्चर्स थे, सील्स के जो पिक्चर्स थे और जो क्लॉथ कपड़ा होता है उसको बुनते थे, बुनाई करते थे। तो जो हड़प्पन के जो लोग थे उनकी जो कपड़े थी वो नी लेंथ, मतलब नी जो होती है उस उधर तक थी और अपर गारमेंट उनका क्लॉथ था। There were many ornaments found in the excavation. बहुत सारे ornaments, बहुत सारे गहने थे कि जो खुदाई के वक्त मिले थे। They were made of the gold, copper, silver as well as seeds and precious stones. Men and women both use the multi-standard necklaces, armlets as well as rings. तो जो men और women दोनों के दोनों नेकलेस यूज करते थे, रिंग्स और बैंगल्स यूज करते थे। The women wear the bangles to the right hand to upper of their arm. तो जो women थी वो इधर अपनी जो बैंगल्स होती है वो उसको पहनती थी, इधर right upper to their arm. So our fifth point is completed, that is life of Harappan civilization. Now we will see about the trade. The Harappan peoples carried out the trade with the India as well as the western countries. तो जो हड़प्पन के जो लोग थे वो ट्रेड, इंपोर्टेशन और एक्सपोर्टेशन कैरी करते थे इंडिया और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ। The Indus Valley was known for its high quality cotton. तो जो इंडस वैली थी उसको किस नाम से जाना जाता था कि उसके पास हाई क्वालिटी के कॉटन थे, that's why the cotton were exported means बेचना। तो जो the cottons were exported to the East Asia, Southern Europe and Egypt. The cotton cloth were also exported. तो जो कॉटन्स थे वो ईस्ट एशिया को भेजते थे, कौन? हड़प्पन पीपल। ईस्ट जो इंडस वैली के जो लोग हैं वो ईस्ट एशिया को भेजते थे एंड साउथर्न यूरोप को भेजते थे और इजिप्ट को भेजते थे। एंड दे आल्सो सेंड द कॉटन क्लॉथ, वो कॉटन क्लॉथ भी बेचते थे। The Indus Valley, the Harappan people provide the Muslim cloth to Egypt. It is not Muslim, it is Muslim. तो जो हड़प्पन के जो लोग थे, हड़प्पन के जो ट्रेडर थे वो इजिप्ट को क्या मुस्लिम क्लॉथ, MUSLIM मुस्लिम, ये क्लॉथ उनको इजिप्ट को देते थे। They imported the silver, zinc, gemstones and others. They imported from the South India, Iran as well as Afghanistan and etc. तो वो जो जेम्स थे, जेमस्टोन, सिल्वर, जिंक, ये किससे इंपोर्ट, मतलब ये किससे लाते थे? साउथ इंडिया से, कश्मीर से और अफगानिस्तान से और ईरान से वो ये लाते थे। The trade was carried out by both land and seas, land route and sea routes. तो जो ट्रेड थी, जो इंपोर्टेशन और एक्सपोर्टेशन थी वो दोनों लैंड और सी रूट से कैरी किया जाता था। The huge dockyard has been found at the Lothal. एक बहुत बड़ा डॉकयार्ड यानी जहाज का स्थान, एक बहुत बड़ा जहाज का स्थान ये हमको लोथल में मिला था। 6 point is completed, that is trade. Now we will see the reasons for the decline of the Harappan civilization. Frequent floods, storms, and due to the
Harappan civilization. It is also known as the Indus civilization. Our second point was house and town planning. In it we learned that the house of the Harappan peoples were mainly built with the baked bricks, and sometimes unbaked bricks and stones were also used. Our third point was seals and pots. The seals were mainly squared in shape and made from the stone called the steatite, and it bears the pictures of various animals as well as humans. In fourth point we learn about the great bath. The spacious bath was discovered at Mohenjo-daro. It was 2.5 meter deep, 12 meter long and 7 meters wide. And there were also gives the line for building the bricks due to the prevent of the seepage of the water. And our fifth point was the life of people during the Harappan civilization. They practiced the agriculture. Their ornaments are of they use the ornaments like the necklaces, armlets, rings, waistbands, and their clothes were consisted of knee length and upper garment. They mainly cultivated the wheat and barley. In Rajasthan, the barley was in the large scale, while in Gujarat it was the ragi. Our sixth point was the trade. In trade, we learned that the Harappan traders provided the muslin cloth to Egypt. The Indus civilization was known for its high quality cotton. So therefore, they exported to the East Asia, Southern Europe and Egypt. And our currently learn about the 7th point, that is reasons for the decline of Harappan civilization. Why declines? For frequent floods due to the coming of the frequent tribes, for the inventions from outside, due to the decline of the trade. So our lesson is completed, that is Harappan civilization, Harappan Sabhyata. Jai Hind.